Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivajakacarya Stutarasita Sri Srimati Divine Grace ISKCON Founder Chair Jagadguru Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivajakacarya Stutarasita Sri Srimati Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Arante Gudi Vaishnavrinda ki jai, Anamacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakti Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopina Shyamakam Radha Kunna Giri Garavadhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Mathura Dham ki jai. Navadvi Mayapur Dham ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. Jamuna Mai ki jai, Ganges Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai, Nitai Gaura Premanande, all glorious Assembly devotees, all glorious Assembly devotees, all glorious Assembly devotees, glory to Shishi Guru Shri Gauranga, Namo Vishnu Pada Krishna Pada Pada Badi Tirtha Swami Sri Krishna Prabhupada Shri Gaurakarna Shakti Badi Tirtha Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tatu Jayam Nasta Prayesa Vadeshu Bhagavata Sivaya Bhagavati Uttama Suti Bhakti Bhavati Nashtigi Om Namo Bhagavati Vasudevaya 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 Om Jnanatimirandasya Jnanandana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sahitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Shvapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapadapamana Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sahadatam Sahagana Raghunatam Vidam Tam Sajivam Sadvitam Sadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakamajanam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishnavamsute Devi Pranami Hari Priye Vanchakalaru Yascha Kripa Sindhu Devasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Hare Krishna Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grande Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 3. Liberation from the illusory energy. Text 25. Srimad Bhagavatam, Skand 11, Adhyay 3, Maya se Mukti, Shlok Sankhya 25. Sarvatra Meshwaran Viksham. Sarvatra Atmanishwaram. Sarvatra Meshwaran Viksham. Sarvatra Meshwaram Viksham. Kaivalyam Aniketatam. Kaivalyam Aniketatam. Kaivalyam Aniketatam. Kaivalyam Aniketatam. Vivikta Chiras Vasanam. Vivikta Chira Vasanam. Vivikta Chiras Vasanam. Vivikta Chira Vasanam. Santo Sanjena Kenachit. Santosham Yena Kenachit. Santo Sanjena Kenachit. Santosham Yena Kenachit. Sarvarmani Sarvarmeshwarini Viksham. Sarvapratmanishwaram Viksham. Kaivalyam Aniketatam. Kaivalyam Aniketatam. Vivikta Chira Vasanam. Vivikta Chira Vasanam. Santo Sanjena Kenachit. Santosham Yena Kenachit. Sarvapratmanishwaram Viksham. Kaivalyam Aniketatam. Vivikta Chira Vasanam. Santosham Yena Kenachit. Sarvatratmeshwaram Viksham. Kaivalyam Aniketatam. Vivikta Chira Vasanam. Santosham Yena Kenachit. Sarvatratmeshwaram Viksham. Sarvatratmeshwaram Viksham. Kaivalyam Aniketatam. Kaivalyam Aniketatam. Vivikta Chira Vasanam. Vivikta Chira Vasanam. Santosham Yena Kenachit. Santosham Yena Kenachit. Mataji. Vicham. Sarvatratmeshwaram Viksham. Kevalya Aniketatam. Kaivalyam Aniketatam. Vivikta Chira Vasanam. Vivikta Chira Vasanam. Santosham Yena Kenachit. Santosham Yena Kenachit. Sarvatratmeshwaram Viksham. Sarvatratmeshwaram Viksham. Kaivalyam Aniketatam. Kaivalyam Aniketatam. Vivikta Chira Vasanam. Vivikta Chira Vasanam. Santosham Yena Kenachit. Santosham Yena Kenachit. Sarvatratmeshwaram Viksham. Sarvatratmeshwaram Viksham. Kaivalyam Aniketatam. Kaivalyam Aniketatam. Vivikta Chira Vasanam. Vivikta Chira Vasanam. Santosham Yena Kenachit. Santosham Yena Kenachit. Sarvatratmeshwaram Viksham. Sarvatratmeshwaram Viksham. Kaivalyam Aniketatam. Kaivalyam Aniketatam. Vivikta Chira Vasanam. Vivikta Chira Vasanam. Santosham Yena Kenachit. Santosham Yena Kenachit. शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा
सर्वत्र सभी जगह आत्मा अपनी आत्मा के लिए ईश्वर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए अनुवीक्षा सतत दृष्टि में रखते हुए ध्यान कैवल्यम मोक्ष अनिकेतता जिसका कोई स्थायी घर न हो विविक्त चीर चित्रे वसनम पहने हुए संतोषम संतोष ये न केनचित किसी भी वस्तु से। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को नित्य चेतन आत्मा के रूप में और श्री भगवान को हर वस्तु के परम नियंता देखते हुए ध्यान करें। ध्यान में वृद्धि लाने के लिए वे एकांत स्थान में रहे और अपने घर तथा घर की सामग्री के प्रति छोटी आसक्ति को त्याग दें। नश्वर भौतिक शरीर के अलंकरण को त्याग कर मनुष्य अपने आप को चित्रों से या वृक्षों की छाल से ढके। इस तरह उसे किसी भी भौतिक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। Yeah, this one is short. कैवल्यम का अर्थ है एकांतवास अर्थात भौतिक उत्पादों से मुक्त स्थान। इसलिए मनुष्य को वैष्णवों की संगति में रहना चाहिए, जहाँ सबका लक्ष्य कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्ति करना रहता है। विशेष रूप से कलयुग में यदि अन्यों से शारीरिक रूप से विलग रहने का प्रयास किया जाता है तो उसका परिणाम पतन या पागलपन होता है। अनिकेतता का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने प्रिय घर की क्षण भंगुर तुष्टि से पगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पूर्व कर्मों से उत्पन्न अदृश्य कारणों से किसी भी क्षण लुप्त हो सकती है। इस युग में आधुनिक शहरों में न तो वृक्ष की छाल पहनना संभव है, न ही चीथड़ा पहनना। पहले मानव संस्कृति आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या करने वालों के लिए सुविधा प्रदान करती थी, किंतु इस युग में सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि पूरे मानव समाज में श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का प्रचार किया जाए। इसलिए यह संस्तुति की जाती है कि वैष्णव जन शरीर को सुचारू ढंग से ढकने वाले स्वच्छ वस्त्र धारण करे, जिससे बद्ध जीव न तो वैष्णवों की उग्र तपस्या से भयभीत हो न घृणा करे। कलयुग में बद्ध जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक रत रहते हैं और कठोर तपस्या का सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि तपस्या को शरीर का घृणाजनक निषेधकर्ता माना जाता है। वस्तुतः तपस्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सफल प्रचार करके श्रील प्रभुपाद ने जो व्यवहारिक आदर्श स्थापित किया वह यह था कि सारी भौतिक वस्तुओं का उपयोग लोगों को कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट करने के लिए किया जाए। इससे वैष्णव जन समय समय पर कृष्ण भावनामृत के वितरण संबंधी उच्च आदर्श का पालन करने हेतु सामान्य वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। कुछ भी हो, व्यक्ति को प्रत्येक दशा में किसी भी भौतिक परिस्थिति से तुष्ट रहना सीखना चाहिए, जिससे मृत्यु की तैयारी हो सके। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मृत्यु के समय इस जीवन में हम जो भी चेतना उत्पन्न कर देते हैं वह हमें हमारी भावी स्थिति तक ले जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन एक प्रकार का अभ्यास है, जिसमें मनुष्य मृत्यु रूपी कठिन परीक्षा के समय अपना मन परम सत्य में सफलतापूर्वक स्थिर कर सके। English translation and purport. One should practice meditation by constantly seeing oneself to be an eternal cognizant spirit soul, and seeing the Lord to be the absolute controller of everything. To increase one's meditation, one should live in a secluded place and give up false attachment to one's home and household paraphernalia.
giving up the decorations of the temporal material body, one should dress himself with scraps of cloths found in rejected places, or with the bark of trees. In this way, one should learn to be satisfied in any material situation. Hare Krishna. Continuation. A devotee should position himself to make advancement in Krishna consciousness. हम उस चर्चा को बढ़ा रहे हैं जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि कृष्ण भक्ति में कैसे प्रवृत्ति की। So many advices given here. बहुत सारे सुझाव दिए जा रहे हैं। In the purport, it is said, Kaivalyam, or living in a secluded place, indicate a place free from material disturbances. तात्पर्य में बताया गया केवल्यम शब्द उसका अर्थ है एकांतवास अर्थात भौतिक उत्पादों से मुक्त स्थान। There's no way in this material way one will not find disturbance. इस संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। Even in a temple. एक मंदिर में परेशानी से मुक्त नहीं। Lot of disturbances are there. बहुत सारी समस्याएं हैं। So, where is the place where there is no disturbance? तो कौन सा ऐसा स्थान है कहाँ है जहाँ कोई समस्या नहीं? It is our heart. हमारा हृदय। If our heart is fully aware of Krishna consciousness, अगर हमारे हृदय में पूरी तरह से कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावना मालिक है we can stay anywhere without disturbance. हम कहीं पर भी रह सकते हैं बिना कोई परेशानी। If the heart is disturbed, और अगर हृदय विचलित है, anywhere you go will be disturbed. आप कहीं पर भी जाओ आप विचलित हो जाएंगे। Even if you go to heavenly planet, you will be disturbed. स्वर्ग जाएंगे वहाँ पे भी परेशान। So we should practice Krishna consciousness in such way the heart becomes pure. तो हमें कृष्ण भक्ति का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए कि हृदय शुद्ध हो जाए। We can live in hell, we can live in heaven, but we will be peaceful. हम नरक में रहें या स्वर्ग में रहें लेकिन शांत बने। In history, Vishwamitra Muni didn't fall down in a household ashram. इतिहास देखते हैं विश्वामित्र मुनि गृहस्थ आश्रम में उनका जीवन में पतन नहीं हुआ। Bharat Maharaj was not in his palace. भरत महाराज महल में रहते थे, He was in a forest. वो फिर वन चले गए। We have also seen so many devotees living Krishna consciousness. और वैसे हम देखते हैं बहुत से लोग हैं भक्ति में आकर खुश होते हैं। But one whose heart is of course with Krishna. जिसका हृदय कृष्ण पर पूरी तरह से केंद्रित है, One who knows the God of Krishna consciousness. और जो कृष्ण भक्ति के लक्ष्य को जानता है, One who knows that in this material world there is always a disturbing situation. जो समझता है इस भौतिक जगत में हमेशा परेशान देने वाली परिस्थितियां रहेंगी। But it is our duty to make ourselves comfortable. लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि इन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ना By fixing ourselves in Krishna consciousness अपने आप को कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर without duplicity, बिना कोई कपट के we'll be peaceful, हम शांति से रह सकते हैं। even in the middle of fire. अग्नि के बीच में भी व्यक्ति शांत रह सकता है। So the Papa was going to give our Gita class. श्री प्रभुपाद जी एक बार भगवद गीता क्लास देने जा रहे थे। And
And the disciple brought a very disturbing letter to him. और एक शिष्य उनके पास एक ऐसा पत्र लाया जिसमें बहुत ही विचलित करने वाली बातें लिखी थी। The devotee was having problem in his temple. उस वक्त को उसके मंदिर में कुछ समस्याएं हो रही थी। So he came to Prabhupada for solution. तो प्रभुपाद जी के पास वो समाधान पाने के लिए आए। He gave a letter to Prabhupada. एक पत्र दिया प्रभुपाद जी को। He looked at it. उन्होंने देखा and dropped it on the table. और फिर पत्र को मेज पर रख He दिया। didn't say anything about it. कुछ नहीं कहा। The devotee was worried. दो भक्त और ज्यादा परेशान हो गए। My temple is on fire. कि हमारा मंदिर में तो आग लगा हुआ है। I need attention now. मुझे अभी इसका समाधान चाहिए, ध्यान चाहिए। Prabhupada dropped the letter. अब प्रभुपाद जी ने पत्र को ऐसे रख He दिया। didn't say anything about it. कुछ नहीं कहा उसके बारे में। And he went for our Gita class. और गीता क्लास देने चले गए। The devotee was furious. वो भक्त काफी क्रुद्ध हुआ। What about this problem? और इस समस्या का क्या? So Prabhupada went to the lecture. प्रभुपाद जी लेक्चर देने चले गए। And then he spoke normally, not with anxiety. और बिना कोई चिंता के उन्होंने प्रवचन दिया। One of my temples was on fire. ऐसा नहीं कि उनको चिंता सता रही थी, मेरे मंदिर में आग He लगी। didn't think about it. ऐसा नहीं सोच रहे थे। He was peaceful. बड़े शांत थे। Gave the class, क्लास दिया, came back to his room. रूम में आए वापस। When he was going to sleep, फिर जब वो सोने जा रहे थे, then he called the devotee. तो उस भक्त को बुलाया Peacefully. बड़ी शांति से। And then he brought out the letter. और वो पत्र उठाया फिर। Do like this. Do like this. Do like this. Do like this. Finish. ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और समस्या का समाधान हो गया। No anxiety. कोई चिंता नहीं। It was peaceful. कोई शांति। So there's no way in this world we are going to stay that no anxiety. ऐसा कोई स्थान ही नहीं है पूरे विश्व में जहाँ पर आपको चिंता नहीं सताए। It is we who have to create that anxiety-free place. वो हमें वैसा एक स्थान बनाना होगा जहाँ पर हमें किसी प्रकार की चिंता ना हो। And when we are free, it is we who have to create that free, anxiety-free place. और हमें एक वैसा स्थान बनाना होगा, चिंता मुक्त स्थान। When that is done, you can stay in Vaikuntha, you can stay in heaven, you can stay in hell, you can stay anywhere peacefully. और वैसे एक बार आपने हृदय में स्थान बना लिया अपना, तो आप कहीं पर भी रहो, वैकुंठ में रहो, नरक में रहो, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, आप सब जगह बड़े आनंद में रहो, शांति से। So, the devotees who think going to Hare Krishna temple, I will be 100% peaceful. You make mistake. हर भक्त ऐसा सोचता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, हरे कृष्ण मंदिर, और वहाँ जाकर मुझे 100% शांत वातावरण मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी भक्ति करना। Who is going to be envious of you as a devotee? अगर आप एक भक्त बन जाते हैं, तो आपसे ईर्ष्या करने वाले कौन लोग होंगे? The non-devotees? जो अभक्त है, क्या आपसे कोई ईर्ष्या करेंगे? It's your brothers and sisters, you are living together. वही लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, वही भक्त जिनके साथ आप रहते हैं। You don't see a lawyer envious of a mechanic, engineer. आप कभी भी एक वकील को किसी इंजीनियर के प्रति ईर्ष्या रखते हुए नहीं देखते। Mechanical engineer will be envious of mechanical engineer. A lawyer will be envious of a lawyer. एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से ईर्ष्या करेगा, एक लॉयर वकील दूसरे वकील से ईर्ष्या करता है। A devotee will be envious of devotee. एक भक्त भी वैसे ही दूसरे भक्त से ईर्ष्या करता है। So we should understand this point. ये समझना बहुत जरूरी है। And 𝐾𝐡𝐚𝐤𝐬 means that one should not be intoxicated by the ephemeral satisfaction of one's home sweet home, which will vanish at any moment by the unforeseen circumstances produced by one's previous activities. अनिकेतताम का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने प्रिय घर की क्षणभंगुर तुष्टि से पगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पूर्व कर्मों से उत्पन्न
अदृश्य कारणों से किसी भी क्षण लुप्त हो सकती है। In this age, it is not actually possible to dress in tree bark in modern cities, nor to wear mixed crafts of cloth. इस युग में आधुनिक शहरों में न तो वृक्ष की छाल पहनना संभव है, न ही चिथड़े पहनना। Who will accept you in his office? आप ऐसी वेशभूषा में जाओगे तो कौन आपको स्वीकार करेगा? They're coming with a bark of a tree. Who will accept you in office? आप एक चाल पहनकर घूम रहे हो तो कैसे देंगे आप? Even if you are Krishna directly. अगर आप कृष्ण भी ऐसी वेशभूषा में आते हैं तो भी लोग नहीं स्वीकार। Who will accept you? कौन स्वीकार करेगा? Come to my office, come and preach to my workers. आओ मेरे दफ्तर में आओ, कर्मचारी को एक प्रवचन दो इसका प्रयोग में। They will close the gate against you. तो दरवाजा बंद कर देंगे आपके चेहरे पर। Or you're wearing a torn cloth all over. या फिर आप फटावा कपड़ा पहन के घूमते हो। You will not be considered a renunciate. आपको एक वैरागी नहीं माना जाएगा। You'll be considered a beggar, a disturbance. आपको एक भिखारी माना जाएगा। Therefore, this is not possible for us this time. इसलिए आज के समय में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। But we have to dress simple. लेकिन हमें सादे कपड़े पहनने चाहिए। Yesterday we were told to be clean outside and inside. कल हमने चर्चा की साफ होना चाहिए बाहर से भी अंदर से। Living a simple life. एक सादा सरल जीवन जीना। The same consciousness. वैसी चेतना। Simple life is also consciousness. सादा जीवन सरल जीवन मतलब चेतना भी सरल हो सारी। Because in our tradition, क्योंकि हमारे in our Christian consciousness, in our tradition, in our Christian consciousness, we have seen many extremely opulent devotees who are pure devotees. We have also seen extremely poor devotees. Both of them are pure devotees. तो हम अपनी परंपरा में देखते हैं बहुत ही ऐश्वर्य युक्त भक्त रहे हैं जो शुद्ध भक्त हुए हैं और बहुत ही निर्धन अवस्था में रहने वाले भक्त भी रहे हैं जो भी बहुत शुद्ध भक्त हुए हैं। Both of them are pure devotees. और ये दोनों ही प्रकार के भक्त शुद्ध भक्त रहे हैं। 𝐤𝐢𝐳 Babaji Maharaj श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी doesn't have a house. कोई घर नहीं, Bhakti Saraswati, his disciple, लेकिन उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत के साथ 64 temples. 64 मंदिर बनाए वो। So which of them is poor, which of them is rich, which of them is pure, and which of them is not pure, which of them? तो इसमें से देखा जाए कोई गरीब है कोई धनी है तो कौन शुद्ध है और कौन शुद्ध नहीं है? Both of them are pure devotees. दोनों ही शुद्ध भक्त हैं And both of them are very rich. और एक प्रकार से देखा जाए दोनों ही बहुत धनी हैं। So it is a consciousness, not just external. ये चेतना की बात है केवल बाहरी दृष्टिकोण नहीं। A person can be very poor and very much attached to the coping. एक व्यक्ति बहुत निर्धन हो सकता है और फिर वो अपने कोपिंग मात्रा से ही बहुत आसक्त हो सकता And है fight. और उसके लिए लड़ सकता है। A person can be extremely wealthy and very detached. और वैसे ही दूसरा कोई व्यक्ति बहुत धनी होकर भी पूरा अनासक्त हो सकता है। We have both of them in our system. ये हमारी प्रणाली में दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। Consciousness चेतना के पर्टिकुलर should be pure. चेतना शुद्ध होनी चाहिए। When the consciousness is pure, जब चेतना शुद्ध होती है there is no problem for a pure consciousness, a conscious person. There's no problem for a pure conscious person. तो शुद्ध चेतना वाले व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं होती। So, Lord Nityananda Prabhu, श्री नित्यानंद प्रभु from the head to the toe, fully decorated.
सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक पूरी तरह से अलंकृत रहते हैं with valuable gems, बहुत ही मूल्यवान रत्न very expensive, costly gems, बहुत ही मूल्यवान from the head to the toe. सिर से लेकर पैर के नाखून तक And one devotee saw him. एक भक्त ने उनको देखा He was bewildered. तो मोहित हो गया This Avadut? अवधूत है ये No. नहीं ये नहीं हो सकता Look at him. देखो तो हमको All the things that sannyasis should never touch, you see all in his body. वो हर वस्तु जो सन्यासी को छूना तक नहीं चाहिए सब उनके शरीर में है He moved with low class people. वो बहुत ही निकृष्ट प्रकार के लोगों के साथ घूमते थे Above all, और उसके ऊपर his danda is iron rod, और वो डंडा जो लेकर रखते थे वो लोहे का था not a stick. लकड़ी नहीं लोहे का This Avadut, he's a sannyasi. ये एक अवधूत सन्यासी है The Brahmin, he didn't understand anything. He didn't understand anything. वो समझ नहीं पाया By looking alone at Chaitanya Prabhu. उनके बाहर के आवरण को देखा But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he agreed. Yeah, this is one is a sannyasi. लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वीकार की हाँ यही सन्यासी So he went to Jagannath Puri, तो जगन्नाथपुरी गए all the way from Bengal. He went to Jagannath Puri. बंगाल से जगन्नाथपुरी गए For this reason, just for this reason. केवल इस कारण He was very disturbed in his mind. वे बड़े परेशान थे मन में Let me go and verify this. तो वो गए कि चलो मुझे इसका समाधान निकालना है So he spent few days with Chaitanya Mahaprabhu. वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के साथ कुछ समय रुका कुछ दिन रुका And one day he said, My dear Lord, और उन्होंने कहा मेरे प्रिय प्रभु if you accept me as your disciple, अगर आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं then I should reveal my mind to you. तो मैं अपने मन को आपके सामने रखना चाहता हूँ बातों को And you should be ready to dispel my doubt. और आप मेरे संशय को मिटा दीजिए Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Yes, tell me. हाँ कहिए The Brahmana said, उस ब्राह्मण ने कहा Now in Navadvip there is an Avaduta. अभी नवद्वीप में एक अवधूत है His name is Nityananda. उसका नाम नित्यानंद है I cannot understand what makes him Avadut. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अवधूत क्यों कहलाता है Please, this is a problem of my heart. ये समस्या है So Sri Chaitanya Mahaprabhu has to narrate the whole story to the Brahmana. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरा वाक्य सुनाया उनको उस ब्राह्मण को पूरी कहानी सुनाई He told the Brahmana, और उन ब्राह्मण को कहा all the ornament on the body of Nityananda Prabhu, जितने भी अलंकार हैं श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर पर गहने हैं all of them from head to the toe, सिर से लेकर पैर तक they represent 9 limbs of bhakti. वो क्या है वास्तविकता में वो भक्ति के 9 अंग हैं Nothing outside. उसके बाहर कुछ नहीं There is nothing material on his वहाँ body. उनके शरीर पर कुछ भौतिक वस्तु नहीं है Go and take his shelter. जाओ उनका आश्रय लो You can have my mercy only if you have the mercy of Lord Nityananda. आपको मेरी कृपा तभी मिल सकती है जब आपके ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा हो You can worship me. You can worship me. आप मेरी पूजा कर सकते हो But if you don't recognize Nityananda Prabhu, your worship is useless. लेकिन अगर आप नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते तो आपकी पूजा बेकार है If you want, go to Nityananda Prabhu. अगर वो कहते हैं आप चाहते हो तो जाओ नित्यानंद प्रभु से मिलो The Brahmana was fortunate. वो ब्राह्मण भाग्यशाली था He went to meet him वो गया मिलने के लिए and confessed. और उसने अपने हृदय की बात Lord कही Nityananda Prabhu forgave him and accepted him as disciple. तो श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया So our tapasya this time, our austerity this time is not about tattered cloth wearing.
तो आज के युग में हमारी तपस्या ये नहीं है कि फटे कपड़े पहनना, it is our consciousness. चेतना हमारी कैसी है। So, previously, human culture accommodated those practicing tapasya or penances in the interest of spiritual advancement. In this age, however, the most urgent necessity is for preaching the message of Bhagavad Gita throughout human society. This austerity. पहले मानव संस्कृति आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या करने वालों के लिए सुविधा प्रदान करती थी, किंतु इस युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पूरे मानव समाज में श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का प्रचार किया जाए। To preach is a big austerity. प्रचार करना बहुत बड़ी तपस्या है, Because we also need to purify ourselves to be able to be effective in our preaching. क्योंकि हमें भी सही से प्रचार करने के लिए खुद बहुत शुद्ध होना पड़ेगा। And because it is a transcendental activity, we have to put ourselves in a situation that we have the message to preach Krishna consciousness. और क्योंकि एक दिव्य कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है, तो हमें अपने आप को वैसे स्थान में भी डालना होगा कि हमारे पर कृपा बरसे कि हम प्रचार कर सकें। This is another special quality of Srila Prabhupada. ये प्रभुपाद जी की एक बहुत विशेष गुण है उनका ये, He represents the teachings of acharyas perfectly. कि वो आचार्य की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से करते हैं। Sri Rupa Goswami taught that we should not follow a principle for following sake, neither should we reject the principle whimsically. श्री रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया है कि हमें नियमों को केवल नियम पालन करने के लिए नहीं करना चाहिए और नियमों को बस उसका तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए मनमाने ढंग से। So Srila Prabhupada lived this life perfectly. तो प्रभुपाद जी अपना जीवन बहुत अच्छे से जिए, आदर्श रूप से। He has said everything which is useful for Krishna and anything which is not useful for Krishna, he rejects. उन्होंने जो भी कृष्ण भक्ति में प्रायोगिक था उसको स्वीकार किया और जो लाभ का नहीं था उसको छोड़ दिया। He applied everything in Krishna consciousness. उन्होंने कृष्ण सेवा में सब कुछ लगाया, So he is successful. तो वो सफल हो गए। We also will be successful by following his footsteps. हम भी सफल हो जाएंगे उनके पद चिन्हों को चलकर। One should have firm faith that he will achieve all success in life by following those scriptures that describe the glories of the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan. At the same time, one should avoid blaspheming other scriptures. One should rigidly control his mind, his speech, and bodily activities. Always speak the truth and bring the mind and senses under full control. मनुष्य को यह खूब श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का वर्णन करते हैं। इसी के साथ उसे अन्य शास्त्रों की निंदा करने से बचना चाहिए। उसे अपने मन, वाणी तथा शारीरिक कर्मों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए और मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए। The definition of Shraddha, or faith, is given as follows in Chaitanya Charitamrita. Shraddha sabdhe vishwasa kahe sudrita nischaya. Krishna bhakti kali sarva karma krita hai. श्री चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय है, कृष्ण भक्ति का है, सर्व कर्म कृत है। By rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में सेवा करने से समस्त गौण कर्म स्वतः संपन्न हो जाते हैं। This confident, firm faith, favorable to the discharge of devotional service, is called Shraddha. भक्ति संपन्न करने के लिए यह अनुकूल दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा कहलाती है। So every devotee should think like this. तो हर भक्त को ऐसा ही सोचना चाहिए।
I will be successful if I keep to the principles of Krishna consciousness. मैं तभी सफल होऊंगा जब मैं कृष्णा भक्ति के जो नियम हैं उसका पालन करूं. It doesn't matter what my senses dictate. ये मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे इंद्रियां क्या मांग रहे हैं. What my mind tells me मेरा मन मुझे क्या कहता है doesn't matter. उससे फर्क नहीं. What matters is I should follow this process as given by the scripture, by our charity, by Krishna, and I'm sure of success. क्या करना है कि ये जो विधि दी गई है हमारे आचार्य द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, इसे बस पालन करना है. So devotees who are worrying, will I be able to make it back to God at this time? That is not necessary. इससे भक्त को ये चिंता नहीं सतानी चाहिए कि हम इस जीवन में भगवान जाएंगे नहीं जाएंगे. I am not perfect yet, I'm not pure yet, I still sleep on japa, I still sleep in a class, I still hang, I still have some flaws, I still have illusion. That is not our business. तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी जब मैं सोता हूँ क्लास में नींद आती है, हृदय में क्रोध, काम इत्यादि बहुत समस्याएं हैं. ये इसके बारे में सोचना हमारा काम नहीं है. We should have faith. श्रद्धा होनी चाहिए By following this process, our success is guaranteed. कि इस विधि का पालन करने से सफलता निश्चित मिलेगी. It doesn't depend on my dictation of my mind. मेरे मन क्या कहता है उस पर फर्क नहीं पड़ता. The mind can do whatever it wants to do. मन जो बोलता है वो बोलने दो. But we should be convinced हमें विश्वास होना चाहिए my success is guaranteed in this process. कि सफलता निश्चित है इस विधि से. It is given by Krishna, क्योंकि ये प्रोसेस कृष्ण ने दिया है confirmed in the scripture and the acharyas. और आचार्यों ने और शास्त्रों ने इसकी पुष्टि की. And in history, और इतिहास में there are many people who follow this path and became successful. Therefore, if I follow in their footsteps, I will also become successful by their grace. इतिहास में अनेक लोगों का उदाहरण रहा है जिन्होंने इस विधि का पालन करके सफलता प्राप्त की. तो हम भी उनके पचिन्हों पर चलेंगे, हमें भी सफलता मिलेगी. So we should not waste our time इससे समय बर्बाद नहीं करना for चाहिए unnecessary things. बेकार की चीजों में. Let's follow the necessary things. जो आवश्यक है उसको फॉलो करना चाहिए. So have faith. श्रद्धा होनी चाहिए. Our success is guaranteed तो सफलता निश्चित है by following this process. इस विधि का पालन करने से. How many times Prabhupada said that? Stick to this process, your success is guaranteed. Stick to this process, your success is guaranteed. प्रभुपाद जी ने कितनी बार कहा है, बस इस मार्ग से जुड़े रहो, ये कार्य करते रहो, सफलता मिलेगी ही निश्चित रूप से. Should be convinced about this. तो ये निश्चय होना चाहिए. Because he is not coming from a conditioned soul. क्योंकि ये बातें एक बद्ध जीव नहीं कह रहा है. It's from a self-realized soul. एक आत्म साक्षात्कारी जीव. From Krishna. जो कृष्ण से. Krishna is speaking. कृष्ण स्वयं कहते हैं. And his pure devotees are repeating that. और शुद्ध भक्त उसी को दोहरा रहे हैं. With their own full conviction. उनका निजी ये विश्वास है, श्रद्धा है. Let us connect ourselves with their conviction that we will be sure, we are sure of success. तो हमें उनके श्रद्धा से, विश्वास से, दृढ़ता से जुड़ना है कि हाँ सफलता मिलेगी. We'll be successful. फिर हम सफल होंगे. That will save us from unnecessary delay. तो ये हमें जो अनावश्यक देरी है सफलता को प्राप्त करने की, उससे बचाए. Because while we are worrying about this, worrying about that, worrying about that, we will forget to do the necessary things. कि जब हम चिंताग्रस्त रहते हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं. Let's follow their footsteps. इसलिए हमें उनके पचिन्हों पर चलना है. Success is guaranteed. सफलता मिलेगी. All right. Finish? 26. 27 to 28. Once you hear, glorify, and meditate upon the wonderful transcendental activities of the Lord, once you specifically become absorbed in the appearance, activities, qualities, and holy names of the Supreme Personality of Godhead, thus inspired, one should perform all of one's daily activities as an offering to the Lord. One should perform sacrifice, charity,
and penance exclusively for the Lord's satisfaction. Similarly, one should chant only those mantras which glorify the Supreme Personality of Godhead, and all one's religious activities should be performed as an offering to the Lord. Whatever one finds pleasing or enjoyable, he should immediately offer to the Supreme Lord, and even his wife, children, home, and very life, he should offer at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने, उनका गुणगान करें और ध्यान करें। उसे विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्यों, कार्यकलापों, गुणों तथा पवित्र नामों में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार प्रेरित होकर उसे अपने नैतिक समस्त कार्य श्री भगवान को अर्पित करते हुए संपन्न करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री भगवान की तुष्टि के लिए ही यज्ञ, दान तथा तप करे। इसी तरह वे केवल उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गायन करते हो। उसके सारे धार्मिक कृत्य श्री भगवान को भेंट के रूप में संपन्न हो। उसे जो भी वस्तु अच्छी या भोग्य लगे, उसे वह तुरंत श्री भगवान को अर्पित कर दे। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी, बच्चे, घर तथा अपने प्राण भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर अर्पित करते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Comments? प्रश्न? Questions? Hare Krishna Guruji, please accept my respectful observation to Lotus feet. My question is, when we are living in house that non-disciple is there, how to increase our consciousness in Krishna on that line? प्रश्न ये है, जब हम घर पे रहते हैं तो हम भक्तों के बीच होते हैं, सब तो अपने घर में, तो कैसे फिर उस माहौल में भक्ति कीजिए? You should know that you have a different path to follow. They have a different path. Both of you are opposite. So you should know it will not be easy. आपको पता होना चाहिए कि आप एक दूसरा मार्ग पकड़े हो और उन्होंने दूसरा मार्ग पकड़ा हुआ है, तो आसान नहीं होगा उस माहौल में रहकर भक्ति करना। So you have to adjust your own consciousness. तो आपको अपनी चेतना को बदलना होगा। And living with people who are not following what I'm doing. आप उनके साथ रह रहे हो जो पालन नहीं करते, जहाँ पालन करते। Should I join them and leave my path? तो हम क्या करें? उनकी जैसा बन जाएं और जो कर रहे छोड़ दें? No. So keep to your path. अपने ही मार्ग पे चलना है फिर। Don't follow them watching television till 12 midnight. Don't follow them. वो लोग रात के 12 बजे तक टीवी देखते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। They don't have sadhana. उनको साधना करनी है। So you sit down there with them till 12 midnight. Tomorrow you are going to chant japa. You think we wake up by 3 o'clock to chant? तो आप उनके साथ बैठ के टीवी देखोगे 12 बजे तक, तो अगले दिन सुबह उठोगे जब करने के लिए, जल्दी उठ पाओगे। Be conscious of what you are doing. तो इसलिए व्यक्ति जो कर रहा है स्वयं उसके प्रति पूरी तरह से सजग रहने की आवश्यकता। So while they are sitting there talking parajalpa and drinking tea and watching television till 12 o'clock, you should go and sleep by 10 o'clock. You should be sleeping. तो वो लोग जो बैठ के गपशप करते हैं, चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं रात के 12 बजे तक, उनको करने दीजिए। आप अपना समय से 10 बजे तक सो जाइए। You have to plan yourself. तो इस प्रकार अपने दिन को प्लान करने की जरूरत है। They want you to sit down and discuss family matters. वो चाहेंगे कि आप बैठो, पारिवारिक बातों की चर्चा करो। What is this? क्या है ये? Who is getting married? कौन किसका विवाह होने वाला है? The child? No baby? उसको बच्चा होने वाला नहीं है। Burials?
barriers, हाँ। relatives, मर गया वो, उसके वहाँ जाना है, money making, business, पैसे कमाने हैं, ये करना वो करना, anything else? और कुछ God there? No. They will not discuss about God. भगवान के बारे में बातें करेंगे नहीं। And you want to become God conscious. और आप चाहते हो कि आप कृष्ण होना, So you don't have anything in common. तो आप में और उनमें कुछ समान नहीं है। They are not enemy, वो शत्रु नहीं है neither are they followers. और न ही वो आप भगवान चल रहे उसको फॉलो करेंगे। Give them their space. तो इसलिए आप वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए You have your space. और आप अपना कार्य करते रहो अपने हिसाब से। Hare Krishna Maharaj, I have two questions. Yesterday we were discussing about truthfulness, and you said that truth must be spoken, even though it is very expensive. So sometimes the devotees, when they ask about our sadhana, so somewhere I have heard that that should not be revealed, it should be concealed. So when I lie, so there is not much of a good feeling. But if I tell the truth, then false ego also will arise and envy to the opposite person also. So for sadhana, what should be done? तो प्रश्न ये है, अगर आपने कहा कि सच बोलना चाहिए अगर थोड़ा महंगा भी पड़े तो कभी कभी हमसे कोई अपनी साधना के लिए पूछ लेता है तो शास्त्र कहता है अपनी साधना को छुपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। तो जब हमसे कोई पूछता है हम छुपा लेते हैं तो हृदय में थोड़ा सा ग्लानि होती है, बुरा लगता है, और अगर बता देते हैं तो थोड़ा घमंड आ जाता है, देखो हम इतना कुछ कर रहे हैं। If someone asks you, how many rounds you chant? 16 rounds. That's not lie. तो मैं आपसे पूछता हूँ कितनी माला जप करते हो? 16 माला। 16 rounds. It's 16 rounds. 16 माला। Let a person found out by herself or himself. उस व्यक्ति को आप पता करने दीजिए आप वास्तविकता में कितना जप करते हैं। I'm chanting 16 rounds. मैं 16 माला जप करती हूँ। It's not a lie. ये झूठ नहीं है। Because if you tell, 64 rounds every day, और आप बोलोगे नहीं 64 हर दिन, the next day you have difficulty. तो अगले दिन आपको कठिनाई होगी। It stops. That sadhana is gone. Because they have projected negative energy towards you. तो महाराज कहने अगले दिन कठिनाई होगी, माता जी कहते कठिनाई नहीं बंदी हो जाता है। तो महाराज कहने क्यों? क्योंकि आपने जिसको बताया वो व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों को जैसे ईर्ष्या इत्यादि आपकी तरफ छोड़ देता है, आपकी तरफ। Why does it affect you? और वो हमारे पर भी प्रभाव छोड़ती है। Because something not 64 rounds. क्योंकि हमको घमंड है, हाँ 64 माला करता हूँ। And you? और तुम? You never started yet. We are on the way. तुमने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। So you become important. You become weak. And that negative energy will affect us. तो वो घमंड हमें कमजोर बना देता है और हम कमजोर पड़ जाते हैं तो उनकी जो नकारात्मक सोच हमारे प्रति वो भी हमें और कमजोर बना देती है। I'm chanting 16 rounds. इसे बोलो 16 माला। That's what Guru asked me to chant. So I'm chanting 16 rounds. कोई मेरे गुरु हमको बोले। Second question. Many times you said that we should serve, a disciple should serve the spiritual master in an attitude of menial servant without false prestige. So in my case, now false ego is there. So in presence of false ego, and you said once that false ego will be the last thing that will go. So in presence of false ego, now I am far away from without false prestige. So it will come at the last without false prestige attitude. That is my question. When will it come, and how will it come? प्रश्न है, आपने क्लासेस में कहा है कि शिष्य को अपने गुरु की सेवा कुछ सेवा को विनम्र भाव से करना चाहिए बिना कोई घमंड के। तो मेरे उदाहरण में, निज उदाहरण में, मुझे तो मिथ्या अहंकार है और जब तक मिथ्या अहंकार है तब तक झूठा घमंड भी है। तो ये तो अभी गया नहीं, तो ये कब जाएगा?
ये अंत में जाएगा क्योंकि मिथ्या अहंकार तो सबसे अंत में ही जाता है, तो ये कब जाएगा और कैसे जाएगा? It is better for us to concentrate on the sadhana and not focusing on my ego. It will stay for a long time. तो हमें अपनी साधना पर ध्यान देना जरूरी है, इस पे नहीं अरे मेरा अहंकार ऐसा है वैसा है, वो तो बहुत समय तक रहेगा। Most important thing is for us to focus, think about Krishna, think about how to do our services or sadhana nicely. These things, Krishna will take them in course of time. ज़्यादा जरूरी हम इस पर ध्यान दें, हमारी साधना हमारी सेवा वो कैसे करें, जो चीजें हमसे दूर जानी है वो कृष्ण समय के साथ हटा देंगे हमारे जीवन से। When we become too conscious of those things, our Krishna consciousness will be less. जब हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सतर्क होने लगते हैं तो कृष्ण भक्ति के प्रति जो सतर्कता है वो कम हो जाती है। Let us forget them तो हमें उनको अभी भूल जाना चाहिए and do the necessary things. जो जरूरी वो करना चाहिए। Krishna would take that as his responsibility. He knows when he will thrust them out. कृष्ण वो अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेंगे और जो जरूरी है उसको निकालेंगे। Let's do our part. हमें अपना कार्य करना है। Krishna will do his part. कृष्ण अपना कार्य करेंगे। But when we are doing our part, like serving or doing our sadhana also, these things, they actually keep coming in the consciousness, and if it remains in the subtle body, no problem. But if it is there in the subtle, it will come appear manifest in the gross also. So now these things will affect everything, sadhana also, service also. What I am doing right now, nobody will enjoy. I am also not happy because I am not happy with my thoughts, the things that are coming from the subtle body. So then how to continue with sadhana and focus and meditate on katha? तो इनका कहना है कि ये जो चीजें हैं ये मन में हैं, सूक्ष्म हैं, लेकिन ये सूक्ष्म ही नहीं रहती हैं, ये बाहर भी आ जाती हैं, कार्यों में, विचारों में, साधना में, सेवा में, और उससे हम खुद ही परेशान रहते हैं, तो हम दूसरे को अपनी सेवा से कैसे प्रसन्न करेंगे, तो इस प्रकार से हम कैसे इसे बाहर निकल सकते हैं। Srila Prabhupada's answer was, Krishna should go on. Krishna consciousness should go on. Maya should go on, but Krishna will win eventually. प्रभुपाद जी उत्तर देते थे कि कृष्णा भक्ति चलती रहनी चाहिए, माया भी चलती रहेगी, दोनों रेस लगा रहे हैं, कृष्ण जीतेंगे। Eventually, Krishna will win. कृष्णा अंत में जीत जाएंगे। Let's continue. हमें बस जारी रखना है। And we should pray. और हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। To make ourselves available for Krishna's mercy. कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। To pray. इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। And Krishna will take care of it. कृष्ण के उसका ख्याल रखेंगे जो चीज़ करनी है। Hare Krishna, please accept my humble obeisances again and again. गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने स्कंद 5 के 6वें अध्याय में पढ़ा था कि भरत महाराज ने जब वो भाव के स्तर पे थे तो वो असावधानी के कारण, कुछ असावधानी बरतने के कारण उन्होंने वो अपने भाव के स्तर से नीचे गिर गए। तो हम डे टू डे लाइफ में जब हम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, जैसे अपोजिट जेंडर और बहुत सारी चीज़ें, तो हम कैसे बहुत सारी तरह से हमारे सामने वो कठिनाई आती है बहुत सारे मामलों में, तो हम उस समय अपनी उस कॉन्शियसनेस को कैसे अलर्ट रख सकते हैं कि इस समय हमें सावधान होना है। तो ये मेरा प्रश्न है। So our question is, I read in Canto 5 of Srimad Bhagavatam chapter 6 that Bharat Maharaj he fell down from the stage of bhava. Now in our day-to-day life we have many difficult situations where there are temptations that we have to deal with opposite gender and so many problems come. So in those moments, what we need to do so that we don't fall down in our consciousness.
be Guru Krishna conscious. तो इसका उत्तर है गुरु और कृष्ण इनका जो भावनामृत है, चेतना में बनाकर So be conscious of हमें कृष्ण और गुरु के बारे में हमेशा my Guru is here with me. मेरे गुरु मेरे साथ हैं, He is following me. वो मेरे साथ हैं, Krishna is here with me. कृष्ण भी मेरे साथ हैं I am protected by them. और वो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। When we are conscious of Krishna, there is no Maya. जब हम कृष्ण के बारे में सोचते रहेंगे तो माया कहाँ रहेगी? It's when we forget that, oh, Krishna is there. That is what the problem is. जब हम भूल जाएंगे कि कृष्ण है तभी समस्या है। So we should remember Krishna. Krishna is there giving you full protection. तो हमें कृष्ण का हमेशा स्मरण रखना है। कृष्ण सुरक्षा देंगे पूर्ण रूप से। Challenges will always be there, always. चुनौतियाँ तो हमेशा रहेगी। Until we are leaving the body, challenges will be there. जब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक समस्या है, चुनौतियाँ रहेंगी। Even when you become pure devotee, एक शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब भी रहेंगी। you will get more challenges than now. और चुनौतियाँ होंगी। But remembering Krishna, those things become things of the past. लेकिन जब हम कृष्ण का स्मरण रखते रहेंगे, बनाए रखेंगे, तो फिर वो चीजें हमारे जीवन का एक अतीत बन जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो जैसे हम लोग जॉब में रहते हैं तो कई टाइप के लोग मिलते हैं, कुछ नास्तिक भी होते हैं, ये पूछते हैं कि भक्ति करके आपको क्या मिला, भगवान मिल गया क्या आपको? तो उनका क्या जवाब देना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए? So his question is that when in our office life we meet many people who are atheistic in nature, so they ask sometimes question, you are doing bhakti, have you met God, have you attained God? So to such questions, what reply should we give, or should we just keep quiet? If they can hear you, somebody asks you, okay, you are doing bhakti, have you seen Krishna? So Prabhupada answered, if I show you God, will you see? If I show you God, will you see? As a person like that. Yes, I'm seeing God, but if I show you God, will you see? The person will not see. So what is the use of asking me? That is my own private thing. महाराज बोल रहे हैं, अगर वो सुन सकता है जो आप बोलने जा रहे हो तो बोलिए। प्रभुपाद जी को भी ये प्रश्न किसी ने पूछा था कि आपने भगवान को देखा है, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि अगर मैंने देखा भी हो और वो ऐसे हो, क्या आप उनको देख पाओगे? क्या आप में देखने की योग्यता है? मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप देख पाओगे कि मैं देख रहा हूँ? तो फिर प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं, आप उनको कह सकते हो कि भगवान को देखना वो मेरा प्राइवेट मैटर है, आपको उससे क्या लेना है? Tell him God is everywhere and I can see. आप उनको बोलो, हाँ भगवान तो सब जगह है, मैं देख रहा हूँ। When you plant seed on the ground, जब आप बीज बोते हो जमीन में, it will produce many. तो बहुत कुछ देता है। Is it your father who is doing that? लेकिन आपने अपने पिताजी को करते हुए देखा था क्या? Who is doing it? कौन करता है? That is God. तो महाराज उदाहरण दे रहे हैं, वो बीज कैसे पौधा बन गया? भगवान ने तो किया। Common sense. Yes, because it's God who is doing that. भगवान ही तो उस बीज को पौधा बना रहे हैं। Is it your parents who are doing this? तो क्या आपके पिताजी कर रहे हैं? No, the scientists? Is there scientists who are doing क्या this? वैज्ञानिक कर रहे हैं ऐसा? No. God is doing that. So भगवान कर रहे हैं। I'm seeing God through His work. मैं भगवान को उनके कार्यों के द्वारा देख रहा हूँ। Yes, God is there. That is why this can function like this. भगवान है इसलिए तो ये बीज पौधा बना ना, पेड़ बना। If God is not there, how will this work? अगर भगवान नहीं होते तो फिर ये कैसे हो जाए?
You can never see anything existing without a source. आप संसार में कुछ भी ऐसा उदाहरण नहीं पाओगे कि कोई वस्तु है लेकिन उसका कोई स्रोत नहीं है। So there's so many supernatural things which are beyond our understanding. ऐसी बहुत सारी पारलौकिक चीजें हैं जो हमारी समझ के बाहर की हैं। Somebody must be behind them. Somebody is behind all these कोई things. तो होगा इन सब चीजों के पीछे। Who is that? कौन है? Cannot be scientists. वैज्ञानिक तो होगा। Cannot be our foolish parent. हमारे मूर्ख माता पिता हैं। It must be God. भगवान। Common sense. Thank you, Maharaj, for the class. You mentioned this point, there are disturbances everywhere in the material world, but there is one place, heart. If one is very Krishna conscious, then he can remain undisturbed in any situation. At the same time, like two devotees are there, they face the same situation, some temptation. One succumbs to it, one is able to resist. And two devotees are there, they are in the environment, which is, every environment has some disturbances. One gets overly affected by it, another becomes strong in the same situation. And devotees, sometimes some devotees are only able to practice when very strong association is available, like that. At other times they become weak. So a practicing devotee, when there are down curves in his spiritual life, how he gathers the strength? Good. प्रश्न है, पहले धन्यवाद देता हूँ महाराज आपकी क्लास के लिए कि आपने कहा परेशानियाँ तो सब जगह रहती है, हमें अपना हृदय ऐसा बनाना हो कि हम परेशान ना हो। लेकिन ऐसा देखा जाता है एक परिस्थिति में दो प्रकार के भक्त होंगे, एक रहेगा जो उसी परिस्थिति में कमजोर पड़ जाएगा और दूसरा होगा वो उसी परिस्थिति में हालांकि समस्याएं हैं फिर भी बहुत अच्छे से भक्ति कर लेगा। तो कुछ भक्त होते हैं जो अगर बहुत अच्छा संग ना हो तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो एक भक्त जो अपनी भक्ति में नीचे जा रहा है वो कैसे ऊपर उठे, कैसे इन परेशानियों से बाहर निकले और ऊपर उठे भक्ति में? Every devotee, हर एक भक्त either low or high, नीचे हो या ऊपर हो, our strengths come from association, good association. चाहे कैसे भी भक्त हम हो, हमारा जो बल है भक्ति का वो तो अच्छे साधु संग से ही आता है, अच्छे संग से, With devotees, भक्तों से संग, especially those who are higher than us. विशेषकर उन भक्तों के संग में जो हमसे ऊपर है। So, in association of devotees, when we serve together, we associate together, we are hearing together, we are speaking together, we are chanting together, we get strength. तो जब हम भक्तों के संग में बैठकर जप करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कृष्ण कथा, हमें आध्यात्मिक बल मिलता है। Two devotees, the same situation, two devotees, one is successful, one fail. Is due to, like in a hospital, someone has a chronic disease and someone has a light disease. Our situation is like that. आपने कहा कि एक ही परिस्थिति में कोई बहुत भक्ति में आगे बढ़ जाता है, कोई नहीं बढ़ पाता है। वैसा क्यों? क्योंकि जैसे अस्पताल है, दो प्रकार के मरीज आए होंगे, एक की बीमारी बहुत कम होगी, एक की बीमारी बहुत ज़्यादा होगी। वैसे ही अलग-अलग भक्तों की अलग-अलग परिस्थिति रहती है। If we are hearing properly, अगर हम ध्यान से सुनते हैं and following properly, और हम उसका अनुशीलन करते हैं, we will have strength. हमें बल मिलेगा। Devotees who are strong now, जो अभी भक्त बलवान हैं, आध्यात्मिक बल हैं, we have also experienced weak in the past also. वो भी किसी समय में अतीत काल में कमजोर रहे होंगे, But because we continued, लेकिन वो जारी रखे इस प्रोसेस को, get strength. तो वो बल को प्राप्त करते हैं। Now we are promoted.
और उनको एक प्रमोशन मिल गया। So all challenges is a stepping stone. तो वो चुनौतियाँ एक प्रकार से उनके लिए सीढ़ी बन गई ऊपर चढ़ने। So those who are not so well fixed, तो जो इतने निष्ठावान नहीं हैं, we should not be discouraged. निराश नहीं होना, We should continue. आगे बढ़ते रहना। This is where knowledge is good. इसलिए ज्ञान बहुत अच्छा, Association is good. संग अच्छा होना चाहिए। We can hear all these things and become encouraged. और हम ये सब सुनकर उत्साहित हो सकते। That I failed today doesn't mean it's an end. आज हम विफल हो गए इसका अर्थ ये नहीं कि अब ये खत्म, अंत हो चुका है। Let me keep trying. मुझे प्रयास जारी रखना है। I will succeed also. मैं एक दिन सफल हूँ। So we should continue. तो हमें बढ़ते रहना है। But one must maintain good association. लेकिन अच्छा संग में रहना बहुत जरूरी है। So I was here. और उस संग में सुनना चाहिए। Every day हर दिन, we should hear. हर दिन सुनना। And Krishna will always give us something. कृष्णा फिर हमें पालन करने के लिए अवश्य कुछ न कुछ। Every day we must get something. हर दिन हमें कुछ न कुछ। That will add to our devotional success. तो वो हमारी सफलता में जोड़, वो सफलता में कुछ जोड़ देगा, कुछ नया लाएगा। So hear every day. सफलता को बढ़ा देगा। Let us hear every day. इसलिए हमें हर दिन सुनना चाहिए। We will always get something. हमें हमेशा कुछ मिलेगा सीखने के लिए। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. कृष्ण। Not a question. I have to thanking you from the core of my heart. You have bring me here. And my elders, forefathers and forefathers before, they came from this region itself. And I'm very thankful to you. Due to you, I've been able to come here. And I can't express in words how much I am happy here. I feel like I am at home. तो वैसे कहा कि मैं महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके कारण मैं इस स्थान में आ पाया। मेरे पूर्वज इसी स्थान से हैं और मुझे यहाँ पर आकर बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। मैं देखते ही कर पा रहा हूँ, उसके लिए आपको धन्यवाद। Hare Krishna. कभी किया नहीं ना यूट्यूब